बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इकबाल किचन कुसाइन। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पिज़्ज़ा। इसे हम ब्रेड लार्ज पिज़्ज़ा भी कह सकते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हमारे पास है ये बॉयल किए हुए आलूज जो हमने स्क्वेयर शेप में कटिंग कर लिए। ये हमारे पास बैंगन, उसके बाद मटर जो हमने निकाली हैं थोड़े से, और ये गार्निश के लिए हमने स्लाइस में कटिंग कर लिया प्याज, और ये स्क्वेयर शेप में कटिंग की है। उसके बाद हमारे पास है टमाटर जो हमने थोड़े से स्क्वेयर शेप में कटिंग किए और थोड़े से गार्निश के लिए स्लाइस में। और ये शिमला मिर्च भी हमने कुछ स्क्वेयर शेप में कटिंग किया और कुछ हमने किया गार्निश के लिए स्लाइस में। और ये हमारे पास है बंद गोभी, ये भी हमने थोड़ी सी स्क्वेयर शेप में कटिंग कर लिया और थोड़ी सी हमने ये इसके स्लाइस बना लिए ताकि गार्निश के लिए यूज़ हो। और ये हमारे पास लार्ज ब्रेड। इसे हम दरमियान में से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने थोड़े से आलू जो मैश कर लिए, सबसे पहले ये इसके ऊपर लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके ऊपर हम लोग लगाएंगे चिली सॉस। ये देखिए, इसको इस तरह से बिल्कुल इसके ऊपर लगा लेना अच्छी तरह से। ये देखें, सबसे पहले हम इसके ऊपर लगाएंगे प्याज जो कि हमने पहले से चॉप कर लिया था। ऊपर लगाएंगे चॉप किया हुआ टमाटर। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ये चॉप की बंद गोभी। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे चीज। इसे हमने अच्छी तरह से इसके ऊपर मैश कर लेना। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ये चॉप किए हुए और पहले से बॉईल कर लिए थे हमने आलू। ये देखो, अच्छी तरह से लग गए हैं ये हमारे चॉप किए हुए आलू भी। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे बैंगन, चॉप की शिमला मिर्च। माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है। अब इसके ऊपर लगाएंगे हम मटर जो हमने थोड़े से उबाल कर लिए हैं पहले से। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे मटर। ये हमारे पास बैंगन चॉप किया हुआ और हमने थोड़ा सा बॉईल कर लिया ताकि जल्दी पक जाए। अब ये लगाएंगे थोड़ा सा ऊपर। आप अगर चाहें तो इसे नहीं भी लगा सकते, लेकिन हमने लगा लिया। चलें, अब हम दोबारा इसके ऊपर चीज लगाएंगे।
and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done, cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. ये हमारा गर्मा गर्म जायकेदार पिज़्ज़ा आगे से बनाए हैं, घर में टेस्ट करें और कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा।